Some big news coming in here. TMC tries to placate MIFT MP Satabdi Roy. Senior leader Saugata Roy speaks to Satabdi, says party will listen to her grievances. Remember, Satabdi has been trying to reach out to Amit Shah. She says don't read too much into it, but also indicated that she's not very happy with the TMC. And now it seems like Saugata Roy is trying to speak with Satabdi and says that party will listen to her grievances. Let's take a listen. ना मैंने उनसे बात किया, उनका कोई ग्रीवांसेस है तो भी मैं पार्टी लीडरशिप को बताया, वो लोग भी सब लोग बात करेंगे उससे। वो तो हमारा पार्टी का एसेट है, जाने से खराब होगा तो देखा जाए क्या होता। वो मुझे बताई कि वो फाइनल सिद्धांत नहीं लिए हैं। Let's cut across to Indrajit joining us live from Kolkata. Indro, here we're looking at Saugata Roy, who is now trying to pacify Satabdi to assure her that the party is going to listen to all her grievances, almost trying to pacify her, showing that they are concerned now. But what does this really mean? Are they insecure that Satabdi might just jump boats? It's quite an indicator that she's meeting Amit Shah tomorrow. Well, Nabila, at this point in time, it's not confirmed that whether she will be meeting Amit Shah and whether she will be going to Delhi tomorrow. She has not ruled it out. She said there is a possibility that she might be going to Delhi. And when I asked her about the possibility of a meeting with Amit Shah, she said that that's nothing unusual. She is free to meet anybody as a parliamentarian. However, at this point in time, the Trinamool Congress is on a firefight mode. They're trying to placate Satabdi Roy. As we just heard Saugata Roy saying that Satabdi Roy is an asset of the party, and therefore what we're given to understand that Saugata Roy has spoken to Satabdi Roy over phone, and Satabdi Roy has expressed her grievances to Dr. Roy, veteran parliamentarian from the party. We are given to understand that other leaders of the Trinamool Congress, like Kunal Ghosh, has already rushed to Satabdi Roy's residence, and they are having a chat with her at this point in time. At the same time, just a short while back, we've also heard from the Birbhum district president of Trinamool Congress, Birbhum strongman and TMC MLA Anubrata Mondal. Even he has said that Satabdi Roy continues to remain in the Trinamool Congress. If she has any grievances, she can obviously raise it within platforms of the party. But at this point in time, there is no talks about her leaving the party. Indra, thank you very much for joining us. But do stay with us. We have more information coming in that the TMC's woes there only continuing unabated. Ahead of the West Bengal Assembly elections, its star MP Satabdi Roy hinted at leaving the party. Roy is likely to meet Home Minister Amit Shah in the national capital tomorrow. Satabdi, an actor turned politician, while speaking to India Today, expressed her displeasure with Mamta's TMC. She claimed that she is unhappy within the party as she is not being allowed to work. She further alleged that TMC is sidelining her by not inviting her to crucial meetings. Satabdi also said that instead of ignoring and raising complaints within the party, Mamta Banerjee should ideally address issues. Speculations over Satabdi quitting the TMC and joining BJP became rife right after Facebook post on Thursday in which Satabdi claimed that she was in mental anguish and she was unable to be with the people of her constituency, Birbhum. In fact, Roy was last seen walking in a march with Mamta Banerjee on December 29th at Bolpur. On 19th of December, 7 Trinamool MLAs were also seen joining the BJP in the presence of Union Home Minister Amit Shah, giving a big blow to the TMC's morals. दीदी, ये बताया जा रहा है कि आप बीजेपी के साथ भी आपकी बातचीत हुई है, अमित शाह के साथ भी आपकी बातचीत हो सकती है, क्या इसका संभावना है? इज देयर अ चांस? नहीं, ये अभी जो हो गया ना पॉलिटिक्स में वेस्ट बंगाल में, जो भी है कुछ भी पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के लिए कुछ भी बोले अपने लिए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टी को अगर कोई एक्सप्लेन करे मेरा प्रॉब्लम क्या है, फिर भी वो बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं। ये हर पॉइंट, हर प्रॉब्लम बीजेपी के साथ है ही नहीं। लेकिन अमित शाह के साथ मिलना भी ऐसा अनयूजुअल कुछ है नहीं। मैं एमपी हूँ, मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ, मैं मिल ही सकती हूँ वो। और ये भी नहीं है जो
अगर आप मिलो बीजेपी में ज्वाइन करो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इश्यूज आप कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत आ रही है, तृणमूल सांसद के रूप में आपका काम निभाने के लिए आपको दिक्कत आ रही है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम मैं वही बोल रही हूँ ना, मुझे जो वोट दिया उसको मैं आंसर नहीं करूंगी। मुझे जो आंसर करना है, जो मेरे लिए है, जो मेरा फॉल्ट है, जो मैं नहीं दे पा रही हूँ, अगर मैं टाइम नहीं देती, मैं नहीं जाती, तो मैं वो आंसर करती हूँ, हाँ इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं आना चाहती हूँ ये। लेकिन मैं जब चाहती हूँ, फिर क्यों मैं जिसमें मैं हूँ नहीं उसको मैं रिप्लाई क्यों करूँ? টিএমসি পার্টির মধ্যে সমন্বয় কোনোদিন ছিল না, এক সুরও কোনোদিন ছিল না। লাঠি পুলিশের ভয়েতে সবাই এক জায়গায় ছিল, যে একটু ঢিলা হয়েছে সব আলাদা হতে আরম্ভ করেছে। আমরা তো সবাইকে স্বাগত করে রেখেছি, আর ওনারা ঠিক করুন কী করবেন। Now, ahead of the upcoming assembly polls, elections in West Bengal, BJP will be holding a key meeting on the state polls today evening in Delhi. In fact, all office bearers associated with Bengal BJP, including Mukul Roy, Dilip Ghosh, will be present in the meeting. Home Minister Amit Shah and BJP Chief JP Nadda will also be attending this meet today. In fact, this comes as BJP's Bengal in charge, Kailash Vijayvargiya, made a stunning claim saying that he is in touch with at least 41 TMC MLAs who are ready to join the BJP. He said that if these legislatures defect, Mamata Banerjee government will collapse. Vijayvargiya added that BJP will not induct leaders who do not have a good image. Remember, Mamata Banerjee's TMC has been hit by a series of defections in just the recent times. মাঝে মধ্যে আমাদের কাজের যে গতি প্রকৃতি সে নিয়ে সার্ভে হয়, আলোচনা হয়, আগামী কার্যক্রম ঠিক হয়। আমাদের মাননীয় অমিত শাহ, মাননীয় নাড্ডাজির ট্যুর হয়ে গেছে বাংলায়, তার থেকে সেটার পর্যালোচনা এবং আগামী দিনে কী ধরনের প্রোগ্রাম হতে পারে এইসব ব্যাপারে নিয়ে আলোচনা হবে। लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। तो क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है।